Dear parents and students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 6th, Subject History and Civics. Chapter number 3rd, Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 29, clothing and jewelry. So now we discuss about their dressing sense, what they wear. Clothing and jewelry. Egyptian were particularly about cleanliness and personal appearance. Means they are very serious about cleanliness, it's good, and their personal appearance. Means their dressing sense, ornaments and everything, they looks very good. And they likes to wear jewelry. Both men and women use cosmetics and wore jewelry and amulets for their protections. Both men and women use cosmetic. Cosmetic means wear makeup. Means Egyptian wants beauty. They wants to look beautiful. That's why they wear makeup on their face. Both flax was woven into fine linen for clothes. Flax, it's a seed which is used, which was woven and used for making linen clothes. Both women and men wore sandals made up of papyrus. They wear sandals which is made up of papyrus. Jewelry consisted of bracelets, rings, necklace and earrings. So basic jewelry they wear are bracelets, rings, necklace and earrings, just like us. Belt buckles were made up of gold and silver, inlaid with precious stone. Inlaid means decorated. Belt, like waistband, yeah, belt, made up of gold and silver. And on this gold belt they inlaid some this belt was decorated with precious stone. The design of Egyptian jewelry often reflected religious theme. Sometimes the design of the Egyptian jewelry, it shows the religious theme. सो इजिप्शियन जो थे वो क्लीनलीनेस और पर्सनल अपीयरेंस मीन्स अपनी दिखावट, अपने ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. मैन और वुमेन दोनों ज्वेलरी पहनते. एम्बुलेंस यानी ताबीज़ जो कि प्रोटेक्शन के लिए पहनते वो लोग. और जो उनका क्लोथ रहता था यूजली वो लिनन पहनते थे. लिनन किससे बनाते थे? फ्लैक्स सीड से मिलकर लिनन क्लोथ बनाते हैं. और जो सैंडल होते थे, जो फुटवेयर होते हैं उनके, वो पपैरस से बनाते हैं. और कुछ ज्वेलरी वो वियर करते थे लाइक ब्रेसलेट, रिंग्स, नेकलेस, ये सारी ज्वेलरी वो वियर करते थे. बट जो उनके बेल्ट के बकल्स होते थे वो गोल्ड या सिल्वर के होते थे, जो भी प्रीशियस स्टोन से डेकोरेटेड होते हैं. और इजिप्शियन ज्वेलरी जो होती थी वो यूजुअली उनके रिलीजन को शो करती, लाइक उनके किंग हो गए, ये सब कुछ. यू कैन सी एन एंशियंट इजिप्शियन एम्यूलेट. इट्स अ एंशियंट इजिप्शियन एम्यूलेट. वो गले में पहनते थे इसे नेकलेस. यू कैन सी. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. The Nile was like a highway that joined the countries together. So, highway, what is the purpose of highway? Highway is used to link different cities. So, in their life,
Nile is a source of highway and which join the countries. Ships and boats were the chief means of transporting people and goods around the country. Ships and boats were the chief means of transporting people and goods around the country. So they use ships and boat for transportation, even transportation of goods or people. The smallest and simplest type of boat used in ancient Egypt. So the smallest boat in Egyptian they use. The name of boat is a skiff made from papyrus reed that were tied together. papyrus reed मतलब ये एक पेड़ होता है, उसकी जो डंकल होती है, डंडल होती है, उससे जोड़ के आपस में ये एक तरीके से बोट बनाते हैं. So skiff is the smallest boat used at the time of Egyptian civilization. सो इजिप्शियन में क्या होता था, नाइल रिवर उनका सबसे बेसिक सोर्स था किसी भी कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का, तो वो उसे हाईवे बोलते हैं. सेकेंड, शिप्स और बोट. शिप्स और बोट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं. लाइक पर्सन को कहीं जाना है या उन्हें ट्रेड के लिए जाना है, गुड्स सामान लेकर जाना है, तो वो शिप्स और बोट यूज़ करते. और सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉल बोट होती थी, उसका नेम था स्किप, जो कि papyrus रीड से बनी हुई है. A model of an Egyptian ship. So you can see the model of Egyptian, it's look like this. Big flat bottom boats called barges. So they have two types of boat. Number one is skiff, it's a small boat, and second boat is barges. Flat bottom means उनका जो bottom होता है वो flat होता है. Also served a ceremonial purpose. Usually barges used on ceremonial purpose, means some function and programs. They were used to move images of gods and transport the mummified bodies and the families across the Nile. So these barges was basically used for to transfer mummified bodies across the river. And the roads were very narrow, so people usually walk and rode donkey or travel by wagons. यूरोपियंस की जो रोड्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत नैरो मीन्स सकड़े होते हैं, तो वहाँ पर वॉक करना ईजी होता है या डोंकी के थ्रू आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं. द मेन आर्टिकल ऑफ एक्सपोर्ट इन इजिप्शियन ancient Egyptian was grain. The main article what they export is grain, food grain. The ancient Egyptian also exported what they exported: linen, jewelry, glassware and furniture. So their main exporting products are linen, it's a fabric, jewelry, glassware and furniture. Gold, copper and ivory were important. What they imported? Gold, copper and ivory. These products they don't have in their civilization, that's why they imported from other countries. क्या क्या वो import करते? Gold, copper और ivory. इजिप्शियन का सबसे मेन एक्सपोर्ट किस में करते थे? फूड ग्रेन्स में एक्सपोर्ट करते. और क्या एक्सपोर्ट करते? लिलन फैब्रिक को, ज्वेलरी को, ग्लासवेयर को, फर्नीचर को. और इंपोर्ट क्या करते हैं जो उनके यहाँ पर नहीं था अवेलेबल? गोल्ड, कॉपर और आइवरी. डिड यू नो टुडे द Egyptian continue to cross the Nile by boat and the vessel they used is called filk, a small boat with a large triangular sail. Okay, if they want to cross the river Nile they use this boat. So in Egyptian civilization
studied about 3 types of boat: skiff, barges, and flick. The economy was based on the barter system. Barter system means exchange of goods and service between the traders. Stone weights were also used to determine the value of goods. To measure the goods, they use stone. The merchants developed an extensive trading network and they built one of the world's first seafaring ship, means ship को चलाने वाला ship, means machine वाला, which were occupied with sails and oars. Okay. सो जो इजिप्शियन थे वो बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे और जो भी गुड्स हैं उनकी वैल्यू को मेजर करने के लिए वो स्टोन को यूज़ में लेते हैं. ट्रेडिंग के लिए उन्होंने सबसे पहला जो शिप बना था, जो कि मशीन के थ्रू चलता है, मैकेनिकल शिप जिसे हम कह सकते हैं, वो बनाया था इजिप्शियंस ने, और उसमें पतवार और सब कुछ होते थे. नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज. The Egyptian language was one of the earliest language to be written. It's very earliest and oldest language. By c. 3200 BCE, the ancient Egyptian had developed a script. Then after they developed a script, the ancient language was written by scribes, the writer, who from a young age and went through a long period of apprenticeship before they mastered the skill writing. An illustration of Egyptian scribes at work. Okay, so here you can see the standing person. He is the trainer who train some students to improve their writing skills, and then after they learn skill of writing. So इजिप्शियन में कुछ लोगों को राइटिंग स्किल सिखाया जाता था, उन्हें राइटर बनाया जाता था जो कि उनकी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, लिटरेरी बुक्स लिखते हैं. एन इलस्ट्रेशन ऑफ इजिप्शियन स्क्राइब्स एट वर्क. नेक्स्ट टॉपिक, स्क्रिप्ट. The Egyptian script is called as hieroglyphic. What's the name of Egyptian script? What's the name of Egyptian script? Hieroglyphic. Don't forget the pronunciation. Hieroglyphic. Hieroglyph means sacred carving. Sacred carving means धार्मिक चीज़ों के बारे में. The Egyptian first used hieroglyphic only for the inscription carved or painted on the temple. Where they use hieroglyphic? On the temple usually. This form of pictorial writing was also used on tombs and sheets of papyrus, and this pictorial writing also there on tombs and sheets of papyrus. So हाइरोग्लिफिक आपको कहाँ देखने को मिलेगी? टेम्पल्स पे, टोम्स पे. क्लियर? Okay, your today's homework, class 6th, subject history and civics, chapter number 3rd, lecture number 4. Homework. Word meaning: appearance. Appearance means दिखावट. Inlaid means decor, decoration. Reflected, represent करना. Ceremonial, समारोह. Seafaring, जहाज को चलाना. सेल्स, पाल. ओर्स, पतवार. स्क्रिप्ट्स, लेखक. apprenticeship, शिष्य. Okay, complete your work and
Send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.